We selflessly led the country's fight against COVID, racing against time, battling all odds. It's a 10-hour shift in the morning, 14-hour at night. There is no break. We fought hard so you could go back to your family soon. Even if that meant we stayed away from ours for days, months. आई थिंक ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है बिकॉज वी हैव नॉट बीन सो हेल्पलेस. Everyone was singing our praises. We were touted as heroes, warriors, gods. Powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. वो डॉक्टर्स, वो नर्स, वो भगवान का रूप लेकर के है. भारत के उन लोग लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स एंड मेडिकल वर्कर्स आर लाइक सोल्जर्स. The entire nation applauded us, hailed our efforts. But these incidents are forcing us to think if the praises are mere lip service and our efforts would soon be forgotten. लानत है हमारे उन देशवासियों पे जो ऐसे काम करने वाले डॉक्टरों पे, नर्सों पे, नर्सेस पे हमला करते हैं. घृणा आनी चाहिए हमें जो खुद अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों का जान बचाने के लिए इतना कोशिश करते हैं. आप उन्हीं पे हाथ उठाते हैं. आप कभी एक बार खुद को इन डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचारियों के जगह पे बैठ के देखो एक बार. It's unfortunate how we are under constant fear of being attacked, not just by kin of patients, but at times by the police too. दिखाई नहीं देता है हेल्थ की गाड़ी है, ये दिखाई नहीं देता है सीएमओ की गाड़ी है. On 23rd of May, when I was returning from my hospital, after performing my day and night shifts of the duty, I was stopped by police personnel at Badshapuri, Srinagar. When I produced my identity card and also my car was bearing a logo and there was a sticker hanging in my car. Despite all these evidences, the police personnel did not allow me to go ahead. When I requested him that I am a doctor and I am already tired, kindly let me go, he became furious and used rude language. Not only this, but also he caught hold of my left index finger and hyperextended it to near fracture. I cried in pain and agony, the pain I have never experienced in my life. वहाँ कौन कर रहा है हम लोग को थोड़ी जिम्मेदारी करा है ना वहाँ पे. तू इंचार्ज है क्या पे? अभी मालूम चला ना सर हम लोग. मैं जानता भी है तू. कौन लोग जानता है तेरे को? Threats, abuses, and harassment add insult to injury. All while we are under so much pressure. सुनो, ये ऐसे 10 हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर खड़ी कर सकती हूँ. उनका लैंग्वेज मेरे रिलेटिव के साथ गंदा था. पता नहीं कहाँ से कुछ बाहरी लोग आ गए 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ. मैं रो रहा हूँ. मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना. इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया. मैंने मुझे नौकरी नहीं करना. In treating you, what happens when we get infected? We are denied beds in the same hospitals where we are fighting it out every day, every hour, every minute, every single second. मैं हरमन हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ. यहाँ पे मुझे बेड नहीं मिल रहा है. यहाँ का डॉक्टर होने के बावजूद भी VIP लोगों ने बेड भर रखे हैं. यहाँ पे VIP लोगों को ही प्रायोरिटी दी जाती है. यहाँ के डॉक्टर को कोई नहीं पूछता है. This is the state of some of the hospitals. Imagine having to work in these conditions. But we selflessly do. DM से जितने भी डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेस हैं, सारे इसी तरह के ड्यूटी कर रहे हैं. उनके भी आधे कपड़े भीगे होते हैं, जैसे तैसे खड़े होते हैं, उसी में ड्यूटी करते हैं. ये आज की स्थिति नहीं है, हर साल की स्थिति है. कोरोना के काल में इस तरह के हॉस्टल की व्यवस्था, तो कोरोना का मरीज क्या इलाज होगा. साथ में कई तरह अनेकों बीमारियां फैलेंगी. गंदे नाले के पानी में हम लोग चल रहे हैं. ये
हम लोग देख देख के थक चुके हैं। सरकार को इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है हम लोग एक डॉक्टर्स नहीं, एक मजदूर हैं। Some of you feel breathless, wearing masks for long. Imagine working for hours at a stretch, often without breaks, while donning a PPE kit. The PPE kit is actually very, very heavy, and once you go inside it, and inside the wards, it is the environment there is so hot. You try to you drench and you sweat so much that it becomes really, really difficult to move around. You cannot see our emotions while we fight in these heavy PPEs. We run around the wards in them, so we can keep serving you. But imagine having to make do with substandard, torn PPEs, wearing used masks, worn gloves, because there are not enough for all of us. Had dawned and gone inside to realize that there were a lot of shortcomings, right from unavailability of the soap and sanitizers to the donning doxing area being almost in the same corridor. The masks which were being provided to us were not of the standard quality, neither were the PPE kits. So the masks being provided were given in open, bare hand. In our PPE kits, the face shields we were being provided was that of indigo. In fact, even these sanitization tunnels were non-functional. Salary do, salary do, salary do, salary do, salary do, हमारा salary do, salary do, salary do. In the middle of the pandemic, with heavy workload, so many of us suffered the woes of unpaid salaries, along with job insecurities. हम लोग अपनी रिस्क पे हॉस्पिटल आते हैं बिना रुके और काम करते हैं, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है, हमें करना चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते, लेकिन हम काम के बदले में हम हमारी सैलरीज तो एक्सपेक्ट करेंगे ना। ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ತೀರ್ ಹೋಗೋದು ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. What happens when we demand the salaries that are rightfully ours? Listen for yourself. Mr. Satyendra Jain came, who's the health minister of Delhi, and we spoke to him especially about the salary issue, but he clearly denied and said that you should not be complaining about all these issues, and you should be working and only serving for the people. Corona cases have declined. We can't be paying you so much, and you know, like if who don't want to work can leave and resign. And if somebody found not to be working, they would be thrown out. Yeah, we were disheartened by listening, by this attitude actually. About 719 of us have lost our lives due to COVID in the second wave alone. But we hardly have time to focus on our personal grief. We have so many to treat, many precious lives to save, battling all odds, racing against time. We do not want grand tributes. Do not call us gods. Just treat us as humans instead. Provide us a humane work environment so that we continue to treat everyone with all our heart, battling all odds, racing against time. Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Support the Quint tab, choose a plan and pay.